Financial leverage, Module 224 of Financial Management. So far we have talked about the concept of leverage, and in detail we also talked about the operating leverage. हमने ये बात बड़ी तफसील से डिस्कस की पिछले मॉड्यूल में कि लेवरेज असल में बुनियादी तौर पर फिक्स्ड कॉस्ट का होना है. अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे स्ट्रक्चर के अंदर होगी तो उससे लेवरेज क्रिएट हो जाएगा. लेवरेज क्या है? लेवरेज प्रॉफिट या रिटर्न का बढ़ना है फिक्स्ड कॉस्ट के ज़रिए से. दिस इज़ व्हाट द concept of leverage is. Now, if that fixed cost component is related to the operations or it is the operating fixed cost, the leverage created is called operating leverage. Now, if we are looking at the financial cost, यानी अगर हम fixed financial cost की बात कर लेंगे तो उस leverage को हम इसी reference से financial leverage कह देते हैं. That is the use of fixed financial cost to enhance the return is what is called financial leverage. दोनों leverages में यानी operating और financial leverages में बुनियादी फ़र्क ये है कि operating leverage हमारे operating profit के साथ relate करता है. So if operating leverage is increasing, that means our operating profit is increasing. And financial leverage is linked with the return on equity, that is the return of the shareholders. So if financial leverage increases, it actually increases the return on equity of the shareholders. Now let's see that how financial leverage actually works. Leverage is determined with reference to the percentage of debt in the overall capital. हमने बिल्कुल शुरू के मॉड्यूल्स में जहाँ फाइनेंशियल रेशोज़ की डिस्कशन की थी वहाँ में हमने लेवरेज रेशोज़ की बात की थी. हमने कहा था कि डेट टू एक्विटी और डेट टू टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स, इस तरह की रेशोज़ लेवरेज को डिटर्मिन करती हैं. अ हायर डेट टू एक्विटी रेशो मीन्स दैट देयर इज़ हायर लेवरेज. क्यों हम ये बात कहते हैं कि डेट के बढ़ने से लेवरेज क्रिएट हो जाता है? क्योंकि हमने लेवरेज को डिफाइन किया है यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. सो पहली चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये है कि फाइनेंशियल लेवरेज डेट की वजह से इसलिए बढ़ता है क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डेट इज़ कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. यानी अगर हमने कोई फाइनेंसिंग डेट की शक्ल में, बॉन्ड्स की शक्ल में ली है तो उसके ऊपर जो रिटर्न या जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो रेट फिक्स्ड रहता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. तो फाइनेंशियल कॉस्ट इज़ फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज. नाउ व्हेन वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन अगर हम अपने डेट की अमाउंट को बढ़ा देंगे तो जाहिर है कि वही परसेंटेज जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ज़्यादा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाएगी. सो ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का होना हमारे शेयर होल्डर्स के रिटर्न को कैसे बढ़ाता है? इसके अंदर एक बेसिक अजम्पशन मौजूद है. वो ये है कि ये फाइनेंशियल कॉस्ट किसी बिजनेस के जिसके अंदर ये फाइनेंशियल कॉस्ट मौजूद है उसकी अर्निंग पावर या उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमेशा कम होगी. यानी अगर बिजनेस 20% प्रॉफिट या रिटर्न अर्न करने की सलाहियत रखता है तो फाइनेंशियल कॉस्ट को 20% से कम होना चाहिए. जब ही ये फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिवली वर्क करेगा और डेट के बढ़ने से शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ेगा. अगर किसी बिजनेस में सूरत हाल रिवर्स हो जाए, यानी कि हमारी अर्निंग पावर कम हो जाए लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा हो, यानी हमारा बिजनेस तो लेट्स सपोज 10% अर्न करने की सलाहियत रखता है लेकिन हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट 15% है, उस केस के अंदर हमारा ये फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिवली एक्ट नहीं करता बल्कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है.
in that case, if we enhance the amount of debt, that fixed cost component will actually reduce the return of the equity holders. So when ROI is more than the cost of debt, ROE goes up. यानी ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं इस डिस्कशन से कि अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओवरऑल रिटर्न कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होगा तो लेवरेज क्रिएट होगा और लेवरेज हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा देगा. लेकिन अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो जाएगा तो हमारा लेवरेज हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी को कम कर देगा. तो let's conclude our this discussion on financial management by saying that financial leverage is the use of fixed cost. Fixed cost is associated to debt, and the percentage of interest generally that we pay on debt is what makes the fixed financial cost. And if we have got better earning power than the cost of debt, financial leverage works positively. Otherwise, it has got a negative element. And this is something which creates risk, which we'll discuss in the next modules.